उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमादरेश अवदक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात इसका मतलब है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी नागरिकों को हमें भारतीय कहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं धनश्री खंडागड़े कक्षा 10वीं से आप सभी के सामने पैट्रियोटिज्म पर अपने विचार की अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। Patriotism is a sentiment that binds us to our land and heritage, is a profound and personal feeling that resonates deeply within each of us. Patriotism is not just about grand gestures or loud proclamations. Then what does it truly means? Patriotism म्हणजेच काय? Patriotism म्हणजे केवळ मोठमोठ्याने गाणे वाजवणे किंवा फक्त स्वतंत्रता दिवस, प्रजासत्ताक दिनालाच आपला देश आठवणं नव्हे, तर ज्या प्रकारे तान्हाजी मालुसरे स्वराज्याचा भार उचलत असताना महाराजांना म्हणतात की महाराज आधी लगीन कोंढाण्याचे मग माझ्या रायबाचे, म्हणजेच पॅट्रियोटिझम. ज्या प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराज वयाच्या 16व्या वर्षी स्वराज्याची शपथ घेतात, म्हणजेच पॅट्रियोटिझम. As we embark on this journey of understanding what does it truly means to be patriotic, let us open our hearts and minds towards our nation love. There is no doubt we all are patriot. हम सभी देशभक्त हैं, पर हम सभी को हमारे इस देशभक्ति को, देश प्रेम को देश शक्ति में परावर्तित करने की आवश्यकता है, which can lead us to nation development. It is a feeling that encourages us to look towards or beyond our individual needs. It is towards our nation, towards the good of our nation. It is being informed citizens who are aware of our rights and responsibilities. It is in the way we protect our laws, help our fellow citizens and protect our environment. जैसे हमारे विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चे अपना कचरा कूड़ेदान में फेंकते हैं. That is knowing our rights and responsibilities towards our nation. Patriotism is the commitment to contribute positively to our society and to uphold the principles of justice, freedom and equality that our forefathers fought for. It is not just about celebrating these differences, it is not just tolerating them, it is accepting them. That is, in the statement I would say, देश पहले और मैं बाद में. In fact, it is a unique color that adds towards our national mosaic. India is a country whose culture is connected to global, to world, in fact to our geography. To support my statement, I would like to say that NASA has reported recently that the sound of rotation of Earth is Om, and we have already built our culture based on our geography. And that is how our geography is connected to our culture. In the conclusion, I would say patriotism is an all-encompassing love that transcends all our barriers. It is the feeling to convert our country to the place where a future generation. तो चलिए हम सब संकल्प करते हैं कि हम सब देशभक्त हैं. ये सिर्फ हमारे शब्दों से ही नहीं बल्कि हमारे कृतियों से भी दर्शाएंगे.